बीसीए का है। समराइज क्लास। चलिए, तो आज हम लोग करना है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप रिपोर्ट्स, यही ना। इसके बाद हम लोग ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। चलो पहले अपना कैमरा ऑन कर लो जल्दी से। कॉमर्स, चलो 3 कॉलम बना दो। डिफरेंस बिटवीन अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, क्वालिफाइड रिपोर्ट और नेगेटिव रिपोर्ट। डिफरेंस बिटवीन unqualified report, qualified report, पता नहीं यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी आवाज जा रहा है, ऑडियो वीडियो? यस सर, फिलहाल ठीक। ओके, ना तो कॉलम बना लिया तुम लोग? कॉलम बन गया? यस सर। सर तीसरा क्या है? क्या बोल रहा है पीयूष? तीसरा क्वालिफाइड रिपोर्ट के बाद क्वालिफाइड रिपोर्ट, उसके बाद एडवर्स या नेगेटिव रिपोर्ट। एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट। तो बेसिस में फर्स्ट पॉइंट लिखना, राइट द फर्स्ट पॉइंट मीनिंग।
मीनिंग, ठीक है। अब मीनिंग राइट इन क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड वाले में फर्स्ट अनक्वालिफाइड लिखना, राइट ऑडिटर्स इशू, auditors issue an unqualified report, auditors issue an unqualified report where the auditor is satisfied, where the auditor is satisfied, Ajay Kumar, with the work of his client. An auditor issues an unqualified report where he is satisfied, fully satisfied with the work of his client. Next, unqualified में लिखना, write in qualified report now. The auditor issues a qualified report. Auditors issues a qualified report. सर क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या अनक्वालिफाइड? हाँ qualified वाले में. Auditors issue the qualified report when is not qualified. Class have you gone mad? डॉक्टर क्या कहते हैं? Auditors issued a qualified report where the auditor is not fully satisfied, not fully satisfied with the work of his client. With the work of his client. एडवर्स या क्वालिफाइड में लिखना, एडवर्स या नेगेटिव में लिखो. ऑडिटर इश्यूज एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट ऑडिटर इश्यूज एडवर्स और नेगेटिव रिपोर्ट when he does not agree when he does not agree with the affirmations ALF IRMATIN affirmations made in the financial statement, made in the financial statement. ठीक है. Now write the next message. True and fair view. True and fair view. True and fair view. लिखो unqualified में. The auditor is satisfied. The auditor is satisfied that the accounts and balance sheet balance sheet, profit and loss account
profit and loss account, and cash flow statement, and cash flow statement do represent a true and fair view do represent a true and fair view. Right, next qualified report. The books of account the books of account, profit and loss and balance sheet, profit and loss and balance sheet do not represent do not represent the true and fair view of a states of affairs. Someone please inform Akash that I'm not going to allow in the class. First, you have to write a written apology, and then only he will be allowed in the class. तो उसको इन्फॉर्म कर दो, पहले वो रिटन अपॉलॉजी लिखेगा, उसके बाद ठीक है. चलिए नेक्स्ट, एडवर्स या नेगेटिव रिपोर्ट. देखो, where there is sufficient basis for the auditor, where there is sufficient basis for the auditor to form an opinion that whole accounts and financial statement do not represent true and fair view. Not represent true and fair view. Last, opinion. Opinion. In unqualified right, the auditor gives clean opinion. The auditor gives clean opinion without any condition or reservation.
The auditor gives clean opinion without any condition or reservation. ठीक है, क्वालिफाइड सर ऑब्जर्वेशन या रिजर्वेशन? रिजर्वेशन या कंडीशन, ऑब्जर्वेशन रिजर्वेशन और कंडीशन. नेक्स्ट लिखना. द ऑडिटर गिव्स ओपिनियन the auditor gives opinion with certain conditions. With certain condition. ठीक है, ऑडिटर यहाँ अपना ओपिनियन देता है सर, लेकिन उसके साथ कंडीशन या रिजर्वेशन ऐड कर देता है. इन द लास्ट वन राइट एडवर्स या नेगेटिव में. द ऑडिटर कंक्लूड्स that based on his सर ये पॉइंट फिर से रिपीट करिए. the auditor concludes based on his examination he is not satisfied with the books of accounts. He is not satisfied with the books of accounts. अभिषेक लिखो. So prepared. ठीक है. The auditor concludes with his on the basis of examination that he is not satisfied with the books of account, so prepared. ठीक है. So this is the difference between qualified, unqualified or reserved opinion. Now what you have to do, just give a read to all the content of audit report because it is the last topic. यहाँ audit report खत्म हो जाता है. And if any doubts, go for the doubts पूछ लो. Then we will do something about essays. essay वाले देखते क्या करना है. ठीक है. So just give a read. तब हम देखते तुम लोग का essays कहाँ पढ़ना और कौन सा है. बिकॉज एससीएस जो तुम लोग बुक में दिया हुआ है नहीं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जो है वो तुम लोग बुक में नहीं दिया हुआ है, तो देखना पड़ेगा तुम लोग कौन सा पढ़ा है. सर से स्टैंडर्ड ऑडिट नहीं दिया, उसमें स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस दिया है. स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस. ओके वेट. जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. यस. रजत, उत्सव, रोहित, आशुतोष, राजवी, कैमरा ऑन करो.
और ऑडिट रिपोर्ट में कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पास कंटेंट तो मिल नहीं रहा है। ठीक है, जितना हमको पीडीएफ मिला है वो पॉइंट्स हम कवर कर देंगे। बात बात देखते हैं।
कोई दिक्कत अभी तक ऑडिट रिपोर्ट में, डेफिनेशन वगैरह में या टाइप में? नो सर, अब तक कुछ नहीं। तो हम लोग आगे बढ़े। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स। जैसे अकाउंट्स में गैप होता है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वैसे ऑडिट में होता है जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, GAAS, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीड्योर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हेडिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीड्योर्स या स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सर हेडिंग गैस, क्या बोले? GAAS, सर हेडिंग फिर से बोलिए। जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और गैस। अब जैसे कि हम लोग अकाउंट से पढ़े थे गैप, GAAP गैप पढ़े थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो क्या Yes, था sir. सर कि जनरली इफ यू आर प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। कि जो लोग भी सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, अकाउंट्स बनाते हैं, उनको ये रूल्स या टेक्निक्स फॉलो करना है सो दैट कि अकाउंट्स में क्या यूनिफॉर्मिटी रहे, सबका अकाउंट्स क्या सेम दिखे बाय द वे ऑफ रूल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, तो वैसे ही ऑडिटिंग में भी क्या ऐसे स्टैंडर्ड्स है सो दैट कि अगर आप ऑडिट करने जा रहे हो तो एवरीवन शुड फॉलो अ सर्टेन स्टेप, हर कोई को एक स्टेप फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज फॉर जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो दैट्स व्हाट लुक लाइक। लिखो क्या होता है गैस, राइट, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और GAAS सब कैपिटल में लिखना, ठीक है, स्मॉल नहीं। अगर शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो यू राइट लाइक दिस, generally accepted auditing standards are set of principles and requirements that provide set of principles के बाद and requirements that provide
the basis that provide the basis for how an auditor prepares, performs, and report the result of audit. The result of audit. तो जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है सर? तो एक प्रिंसिपल है, ये लॉ है जो आपको बताता है कि ऑडिटर को जनरली सर कैसे अपना ऑडिट करना है, हाउ विल बिगिन द वर्क, हाउ विल परफॉर्म द वर्क, और कैसे उस काम का वो ऑडिट रिपोर्ट अपना रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, द स्टैंडर्ड डील्स विद दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, देखो इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड and issued by American Institute of Certified Public Accountants. सही, इशूड के बाद It was originally developed and issued by American Institute of Certified Public Accountant. American Institute of Certified Public Accountants. In 1972, in the year 1972, किस साल हुआ था सर? 1972 में। In the year 1972, आगे लिखिएगा। The current gas जी है, बस मत गैस मतलब यहाँ GAAS, ठीक है। The current gas comprises of 10 standards. 10 standards with which AICPA AICPA's member are required to comply. मतलब करेंटली अभी इसमें 10 स्टैंडर्ड ओपनिंग प्रोसीड्योर्स है, वर्किंग प्रोसीड्योर्स है, जो कि ऑडिटर्स लोग को फॉलो करना है। Those who are auditors, those who are members of AICPS, they have to follow these standard operating procedures. Okay? यस सर। Change the paragraph and write AICPS differentiate auditing standards from auditing procedures. AICPA differentiate
auditing standards from auditing procedures by saying that अब जो बोल रहे हैं राइट डबल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा by saying that audit procedures are the act that an auditor audit procedures are the act that an auditor performs during the course of an audit to comply with auditing standards ठीक है तो सर ऑडिट प्रोसीड्योर क्या हो गया तो इन सिंपल मीनिंग इट इज द प्रोसेस दैट इज अडॉप्टेड बाय एन ऑडिटर ड्यूरिंग द वर्क ऑफ ऑडिट बाय फॉलोइंग द डिफरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है AS1 AS2 AS3 AS4 in the same way there are standards of auditing which is required to be followed by an auditor while he is performing the audit work and that performance of audit work is known as audit procedure. So is it clear? यहाँ तक बात क्लियर सबको कि ऑडिट प्रोसीड्योर क्या ऑडिट स्टैंडर्ड क्या Yes, है sir. तो Yes. सिंपल टर्म्स से समझो तो स्टैंडर्ड्स आर द लॉज ठीक है स्टैंडर्ड जो है लॉ है और प्रोसेस है कि सर आप जो काम कर रहे हैं आप जो प्रोसीड्योर कर रहे हैं तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग द ऑडिट वर्क द लॉज शुड बी मेंटेन जो भी स्टैंडर्ड्स है जो भी प्रिंसिपल है उनको आपने ध्यान रख के अपना ऑडिट का काम करना है इज इट क्लियर